Sujit. Mr. Biswajit, on your mic, please. Yes, sir. Yes, Hello, good Mr. evening, sir. Good evening. Biswajit, uh, what is the full form of ETABS? नहीं भूल गया सर. You are near to finish the ETABS. What is the file format of ETABS? It's a .edb. .edb. Suppose I have a 2020 version of ETABS and you have a 2016 of ETABS. I just want to show you my file. How can I show? Sir, .e2k file will be created, sir. .e2k file format. Okay. Which company made this software ETABS? CSI company, sir. CSI companies made this. Construction and software. Okay. CSI company made this software. Okay. What is the use of load cases in ETABS? Okay. Sir, load case we used for the maximum defined loads for maximum defined loads, sir. All Okay. types of loads, sir. Okay. Suppose I just provide the one floor and in one floor I just provide the materials, grid and everything. I just want to copy the complete things for the next 20 floors. How can we do steps? Sir, first of all, I have to create the story for 20 floor Okay. and then edit section, edit menu bar, and Okay. then replicate the frame, sir. Replicate. Replicate the frame Replicate. How can we replicate? from edit menu bar, and there have a option replicate. Replicate. Okay. Suppose I just want to draw the curve shape beam in ETABS. How Uh, can we draw? Sir, in beam property box, we will see the drop down menu bar, and there arc option is available, sir. Arc option is available. Okay. Uh, how can we provide or diaphragm in the structures? What are the steps for the diaphragm? First of all, diaphragm, select the all floors and select the define section, and there will be option diaphragm, and we will choose the rigid frame, and then select all floor and assign the diaphragm which Okay. we have created. How can we provide mass source and what is the use of mass source? Mass source, uh, no sir. No idea. In StatPro, how can we provide or how can we do wind analysis? Tell me, complete the steps. Wind analysis. Wind analysis. First of all, define the load pattern, Hmm. and we will create the load name wind X, wind Y, Hmm. and create the and select the IS code of wind analysis 875/2015, Okay. and then modify lateral loads. Okay. There will be there have some settings, Hmm. and what's the I just want complete steps in the wind analysis. Right? You can just say it define after the property box. In property box, provide the material, then support, then go to load, and in load there is option. First we need to define that definition, right? In then definitions we just go. I'm not going to explain you. This is your topic, so you need to explain by yourself. Okay. One more questions. How can we design shear wall in ETABS? Last question. shear wall? So first we create the
pier level from defined section, and uh, wall stacked auto wall stacked option is available there, Hmm. and we select the dimension and height and the opening area from the wall stack procedure, and Okay. then we apply the fire in the frame, Okay. and fire level assign process is assign menu bar and fire level. Hmm. Assign menu bar, then select cell, Hmm. then fire level, Hmm. and select all the mm, shear wall, Hmm. then apply this. Okay. Approx steps are the okay. Biswajit, what was the project in college? Sir, recently I have done in structural Gurukul batch some type of project. Hmm. No, no. In In college, which complete project you completed? no, sir, no, I did not have any project, sir. So you can mention any projects. You can mention, okay. You can mention G+3 complete analysis, building, planning analysis and design with the help of stat pro. ऐसा ही बता दो. जीरो बताओगे या फिर बोलोगे हमने किया ही नहीं तो गलत इंप्रेशन है ना, right? I don't know Okay, sir. I don't know what you completed in your college, but if you explain कि okay, I'll just do the with the help of stat pro the G+3 building design, तो मैं क्या करूंगा, मुझे डाउट होगा, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ कैन वी डू, and you know very well how can we design. Got Yes, sir. it? So you need to be explained, like zero answer is not good, you can just explain something, okay. Okay, what's your salary expectation, Vishwajit? Salary, sir, as per industry norms, As per industry it is norms. okay, sir. Okay, what's your hobby? So my hobby is sketching, and uh, Which type of sketching you done? sir, normally in my pleasure time, uh, I am sitting with a pencil and draw something, sir. Okay, you done any of yours own sketching? No, sir. What is coming on mind, Okay, then I will put down this. okay, okay. I thought ki just like humans, you can just draw. Like suppose I'm sitting here, you can just draw how I'm sitting here. That I was sketching. I just realized you created by according to your mood. Ki okay, what's in your mind, right? That Yes, sir. that you like. Okay. Thank you so much, विश्वजीत. Try to work on ETAPs क्योंकि देखो अभी ETAP कंप्लीट हो गया और ETAP का फुल फॉर्म ही नहीं पता है ना, तो दिस नहीं विल, पता है सर, भूल गया सर. हाँ हाँ, तो वही होता क्या है, क्या तुमने एनालिसिस किया नहीं है, विंड एनालिसिस स्टैट प्रो में किया है, ETAPs में भी किया है ना, बट स्टेप्स हमें याद है क्या, वो इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, अब सोम तुमने पढ़ा है, तुमको ही पता है तुमने पढ़ा है तभी तो डिग्री पास किया है ना, बट वो याद है क्या कि शियर फोर्स होता है क्या है, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, डिफ्लेक्शन होता क्या है ना, तो हम कितना यहाँ रखे हैं वो इंटरव्यू मैटर करता है, घर पे तो बहुत है, राइट. ओके, नो इशू, ट्राई टू वर्क ऑन दैट. ईटेप्स अगर हम बोल रहे हैं किसी को तो उसको इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि पूछ ले जहां से वो पूछना हो उसको. ठीक है, स्टैट की बात कर रहे हैं, पूछो, कितना पूछोगे स्टैट प्रो को, पूरा यहाँ पर ऐसे आंख बंद करो, पूरी स्क्रीन तुम्हारे सामने दिखनी चाहिए. ठीक है, इस लेवल पे ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा. ठीक है. ओके. ओके सर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर प्रथमेश. प्रथमेश इज देयर? Hello, यस प्रथमेश. good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. प्रथमेश, how can we design any buildings in StatPro with the help of seismic analysis? Means seismic plus normal design. Tell me the complete steps. Sir, first of all, we can
design the start with the modeling process. Hmm. We can if you are designing for practice purposes, we can do it through run structure wizard Hmm. uh, with uh, normal normal spacings. Hmm. The spacing between we can draw it after, or we can do it from modeling as per the designing. Sorry, as per the drawing, we can design it model. Hmm. We can uh, we can replicate that structure Hmm. by drawing the first floor. We can In, replicate it. in AutoCAD we do in StatPro we do replicate. Uh, Sorry, sir, I am not. Translation And repeat. oh, yes, translation repeat. We can repeat the columns and beams with Hmm. respect to floors. Hmm. After, after that, we can go for generals, and we can define the properties of different sections such as beams and column, whichever size we need, and we can assign that to different frames. Hmm. After that, we can assign loads. uh, Loads, if you are defining, if you are trying to give seismic loads, first of all we should define seismic definition, in which zone we are placing the Hmm. zone, the soil types. After that, uh, we can generate load cases in which Hmm. we can add different earthquake loads in x and y direction, positive Hmm. and negative, Hmm. and we can assign it to the designed model. Hmm. After that, in the load cases, we can generate dead load and live load. Sure. Definition is okay. After that. So in load cases, Hmm. we can add uh, dead load. And Okay. in that in dead load, we can add self fit Hmm. flow, the wall loads, Hmm. parapet wall and interior wall and exterior wall loads, Hmm. and the self fit of the floor bed. Hmm. So after that, also we can assign live load Hmm. in different floors. We can give the range. Similarly, in assigning the floor bed in dead load, we can give the Hmm. range of the floors it will assign. And uh, after that's a perform analysis Hmm. can do, and which we shall run the analysis. Okay, but we are going to finish the design also. This is analysis. Next. Okay. Uh, so after that, if you are designing RCC structure, we can go in RC design, uh, RC design, and sorry sir, I am not remembering right now the Okay. steps. After analysis, you will get one more one warnings. UVC load. Yes. How can we fix that warnings? So we to remove the errors, we should go in the uh, editorial file, Stat editor. stat editor file, and where the seismic loads are definitions are assigned, like Hmm. EQX and EQY. Hmm. Uh, we after the load, we should give some space, Hmm. uh, and perform check. We should Perform analysis. perform analysis. Then change. Perform Okay. analysis change should be. Okay. If we to provide in fourth direction, we get that fix the warnings, right? Yes. So this means what? How much be prepared that we can see from this, na? Yes, Now, sir. why I'm asking about from the stat? Because right now you're using the ETABS. Definitely Yes, you sir. know the ETABS, right? Yes, sir. But we forget the stat. Yes. Now come with AutoCAD. In AutoCAD, suppose you know AutoCAD 3D. Yes, sir. Okay. But, Suppose in AutoCAD 3D, okay, there is a rectangle box.
I just want to draw one circle on that rectangle. And Yes, if sir. I'll try to draw with the help of circle command, but it's not showing there, means it's not draw. I'm trying to draw that, but it's not trying to, like, I just want to draw in face, but it's not possible. How can we do that? Sir, we can on the dynamic UCS. Hmm, very good, Uh, Bosudhar. This is the point. Okay, how can we create dynamic blocks in AutoCAD, and what is the use of dynamic blocks in in AutoCAD? Sorry, sir, I don't know about the dynamic blocks. Dynamic block, you don't know. Static blocks, you know. Yes, sir. Okay, what is static blocks? Uh, s- Sir, the blocks which can be molded Hmm. as per the height and width, the dimension which can be uh, three dimensions like height, width, and dimension which could be extruded on, which can Okay, we can increase or decrease the size. okay. What's your salary expectations? Sir, I would like to be paid as per industry norms. I want to know in numbers, like, because I just want to be clear. Are you compatible with our package or not? So I just want to know your expectations in the numbers in Uh, CTC. Sir, I would be flexible from 4 to 4.5 CTC. What is CTC? It's a cost to company. Cost to company. So you're looking for the 4 to 4.5 lakh CTC. Okay. But Yes. in my company, the budget for freshers is 3 to 3.6. Are you compatible to work with us in 3 to 3.6? Yes, sir. If the company provides me the equal opportunity to grow, to reach the salary which I am expecting right now, Hmm. which the company will provide me with the responsibilities and the opportunities to grow myself, I will be really happy to work. Okay. In my company, there is 2 years bonds also. Are you compatible to work with us with the bonds? Uh, so naturally, I'm not comfortable with the bonds. I will have to look into it, the terms and conditions. If it is feasible with me and with the salary, I will be happy to. Okay. If not, means you just your focus is on your money or means package, or you want to learn something. Sir, with the salary expectations and with the terms and conditions of the company also, whether if I'm not comfortable with the growth requirement in the 2 year span. Mhm. So, with that perspective in mind, I would like to take some time and think about it. In my company, there is a sometimes require the part-time works, means extra works. Okay, it's not possible to finish in the office hours. So we need to do sometimes extra works after the office also. How you looking that? Are you compatible for that? So, I think once in a week or twice in a week, it will not be a problem. The weekends, I think it will be not be. I'm not looking to work for a weekend on weekends, but in working weeks, if want to do extra works, I'm comfortable. Okay. Once or in 2 days you're comfortable, but not every day, right? Yes. Okay. Suppose I just hire you and after 1 month you got one new package with the 10% hikes. Yes. Then what will be your action? You will join that company or you'll stay with us, and if you stay with us, why? Since as seeing that scenario in mind, as I worked for 1 month, I must have liked something the work culture and the experience which the company holds and which I will be beneficial in the long term. So I'd like to stay with your company. Okay, you will leave to work in the long period. Yes. Suppose I just hire you for the direct manager profile. Okay,
for the manager profile. And there are many of your staff will be the your team. How will manage your team? How you will motivate them if suppose that requires every day extra works after the office? How will motivate them? Getting my question? Sorry, sir, my net was lacking, sir. Can you Yeah, repeat the question? you can just off a video. It will be easy for you. Then it will be work. Yes, I sir. just said, like, suppose you are the manager of any company, okay? And as a manager, you have a responsibility to finish the works, but for finishing that work with the deadlines requires every day extra work after office also. How you will be motivate your team so that they can rest there, they can stay there with you at least 2 to 3 hours for extra works every day. Uh, Sir, I would have to recognize the teams which have which in the company are working for because some the extra time money which company pays, some people may like that and may work for dedicatedly towards it, and some person may have to learn different skill and may have to reach at different positions in the company and may to excel themselves, and they will be willing to voluntarily help. I would voluntarily choose if they are willing to work, and if the workload is high, I will obviously the make some people to work with the perks for working with extra time. Okay, very good. Thank you so much, Mr. Patris. This was nice to talk. Thank you, sir. Okay, now Mr. Prakhar, and then Sunil, then Satyasu. Prakhar, audible now? Okay, maybe he's not right now. Okay, let's come with Mr. Sunil. Sunil, Yes, sir. Good evening, sir. good evening, good evening. Sunil, in last 1 week, what you prepare? In About la what, sir? in last 1 week, what you prepare? In software, sir. Definitely in learning, whatever. In last 1 week, what you prepare? Any topic, any software skills, any books? What you achieve in last 1 week? Result in it. Uh, in last 1 week, I learn about ETAB software, Okay, and in ETAB software, uh, how to design a structure, and after designing, uh, what errors are coming, then how to solve these error, and analyze the ETAB files, how to import in RCDC. okay. How can we import the column file in RCDC from ETABS? Tell me the Um, steps. After analyzing the file, first of all, we have to export the file, export the ETAB file in MS Access format, Okay. uh, .md format. Then again save the MS Access file. Then open the uh, after saving, we have to close that file. After that, we have to open RCDC software, and first we have to fill the project name, Hmm. client name, engineer name, and then open the file, open the .mbd file, and after that, we have to select uh, what we are trying to design. That is the pile and foundation design, column design, beam design. In our case, Suppose column. we are trying to design a column.
Then we select the column and then create new project. After that, we fill details of detail of column like the grade of concrete, grade of reinforcement, and some other details like the cover of cover, the size of bars, and load patterns what we choose in design. And after that, we, we design the auto design. Hmm. Uh, After designing, we see the detail of elevation, uh, cross section, um, also bar bending schedule, and an estimation part of per cubic meter also. Got it. Very good. Okay, one more questions. What is the full form of ETABS, Sunil? It have extended three-dimensional equals extended three-dimensional and extended three-dimensional analysis Okay, what is the full form of StatPro? structural analysis and design program. Okay, very good. What is the file format of ETABS? .edb. .edb. And what is the file format of AutoCAD? or .dwg. Okay. One more and last question from you. How can we design the shear wall in ETABS? Oh, sorry, in StatPro. Just tell me the steps. Sir, currently I can't remember. Okay. पूजा हो रही है क्या तुम्हारे घर के पीछे? मंदिर है सर नजदीकी. ओके. तो इवनिंग में डेली होता है क्या? सावन मंथ है ना सर. अच्छा, शिव जी का होता है. नहीं सर, लोग देवता का टेम्पल है एक, पर सावन मंथ में डेली होती है. अच्छा, ये लोक देवता है. ओके. हाँ जी. ओके, ठीक है. वो बैकग्राउंड आवाज आ रही थी ना, तो यस सर. अच्छा लग रहा था, इसलिए होता है. ओके. प्रथमेश, व्हाट्स योर सुनील गोल? सर. सॉरी 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 सुनील, व्हाट्स योर गोल सुनील? Sir, in short term, I want to explore the structural field and want to gain more knowledge as much as I can get. Okay. How much you rate yourself out of 10 in StatPro? Uh, Sir, 5. And in ETFs? Sir, 4. AutoCAD? AutoCAD, sir, 5. What is the use of purge command in AutoCAD? Not no, sir. What is the use of overkill command in AutoCAD? Overkill command is used when some lines overlap each other, and we have to export that file, import in other software. So we have to use that overkill command. Okay, very good. Thank you so much, Mr. Sunil. This was nice to talk with you. वर्क करो ऐसे ना, एकदम एक एक स्टेप याद रहे. ठीक है, अपने आप आगे बैठो. ठीक है, क्लास छोड़ दो. ऐसे इमेजिन करो कि मैं ई टैब में कैसे शेयर वॉल का डिजाइन करूंगा, स्टैट प्रो में कैसे करूंगा. क्या मुझे पूरा स्टेप याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है तो समझ जाना तुमसे अच्छा कोई नहीं सीखा है. ठीक है, अगर अपने घर पे बैठे हो, घर से बैठ के ऑफिस तक का रास्ता अगर तुमको पूरा यहीं पर से विजुलाइज हो रहा है कि ऑफिस में इधर किनारे एक पेड़ है, फिर इधर से गेट है, इसका मतलब है तुमने पूरा ऑफिस का रास्ता रट लिया है. राइट? यस सर. यही चीज यहाँ करना है. सक्सेस. ठीक है, Okay. चलेगा. Thank you, sir. ओके जी, मोस्ट वेलकम. नाउ मिस्टर सत्यांशु. Good evening, sir. Good evening, good evening. What you learn from today mock?
I learned from the previous software tools used to in previous software tools uh, like uh, drafting, like modeling and analysis in stat pro example, just how wind analysis and seismic. Okay. What you learned today? I learned today's lecture. It has from lecture 28 to 31. First of all, 20 lecture I watched the lecture 28 में how to import ETAP file to RCDC Hmm. and Excel, Microsoft Excel. Hmm. What is the file format? Sorry, what is the full form ETAPS? ETAP perform extended three dimension analysis building system. Analysis buildings. Very good. How can we do? How many lectures complete? 31. 31 lecture maybe define RCDC theory in process theory process. Correct. Difference between ties and stirrups. Tiles tiles and different tiles is used to column and stirrup is used to beam. For what? They are band it is used provide the bending of steel, Difference vertical steel member difference between and sagging horizontal steel member. difference between sagging and hogging. Sagging is beam sagging upward direction, generate a negative bending moment, and hogging is create a positive bending moment, downward direction. How hogging will come? Uh, uh, suppose beam suppose beam provide sagging. Suppose beam is sagging, then uh, out outer the outer surface is provided a maximum steel, extra development length and development bar provided. What I asked you in last mock. Uh, I cannot attend the last mock. Whenever you attend your last mock, I'm talking about that. You asked me HR questions like your goals and you expect 5 year and introduction, then and deflections, what is deflection and shear force. Um, Okay. So what is deflection? Deflection, it is a provide def, deflection is when a body is applied the load and body is deflect permanent body is deflects when a body is applied load, then body is deflect, uh, is called deflection, not proper Okay. definition What is shear force? actually. Shear force, it is shear force is a I explain. Shear force is a negative. Downward side is up negative. Sorry, sir, I am not explain. Wait, carefully. लास्ट हमने सपोज आज कोई क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये आंसर दोबारा नहीं किया, ये बहुत गलत बात है सतीश। इसका मतलब क्या है? मॉक को लेने का बेनिफिट क्या है? आज जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपसे इन द सेंस आप 5 लोगों से 6 लोगों से, उस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता, डजंट मैटर, लेकिन नेक्स्ट मॉक में उसका आंसर हमें आना चाहिए। यही है ना Yes, sir. बेनिफिट? यही है ना आपने मॉक का, ठीक है।
और क्या बोलते हैं, चलो अभी सॉरी ईटैप्स के पूरे लेक्चर्स वॉच कर लो कंप्लीट। आज आपको मैं सेफ सॉफ्टवेयर दे दूंगा, इंस्टॉल कर लेना, और केवल आराम से केवल एक लेक्चर वॉच कर लेना सेफ का, ठीक है, एक लेक्चर। बाकी कल सेफ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है जी। चलो मिस्टर विशाल। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इन विशाल। विशाल, what's your good habits and what's your bad habit? My good habit is I wake up early in the morning and I practicing yoga, uh, pranayam, and meditate for some time daily. At what time you wake up? 5:30 to 6 between 6 a.m. Okay, 5:30 to 6. tell me any five asan name. It is a Bhujangasana, Padmasana, Uttan Padasana, uh, Parvatasana, Hmm, Mayurasana, hmm. Very good. Surya Namaskar, Surya Namaskar. How including many steps all. in Surya Namaskar? There is a 12 steps in Surya. And how many months in Surya Namaskar? Sorry, sir. Hmm? Om Suryaya Namah, Om Khagaya Namah, Om Vrichaya Namah. Don't know? Yes, sir. 12. No, Okay. sir. It's 108. No. It's 12 or 13 approx. 12 I'm sure, but I think it's 12 to 13. Okay. I was remember the all, but right now I'm not doing, so I just forget. So I was remember that with the numbers, sixth number, fifth number, or every numbers, because we are used to with that in school every day. Okay, I was in that school where every day there was the steps you need to do that, then only will start your class. So I just remember that. Okay, so you like your yoga and pranayam, right? Yes. Difference between yoga and pranayam. Yoga is basically work on our body, and Mm. pranayam work on your respiratory system and whole body system, and also mind and sound. Mean pranayam aim is to control your mind, Yes, right? Control your mind through your breath. through your breaths. Correct. So, how many minutes you do that pranayam? Minimum 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes, right? And I definitely will do the anulom vilom also. Yes, sir. First, Bhastrika for 5 to 8 minutes. Hmm. Then Kapalbhati. Hmm. Kapalbhati for minimum 10 minutes. Then Bhaya Pranayam. Hmm. Then Udgit. Hmm. Then Anulam Vilom for 15 minutes. Hmm. Then Pranav. And then some. Okay. After that, you feel this is you do that before 7 Yes, sir. Or in whole day, I get some time, or I feel I'm in low. tension, or low energy. I feel then I I Uh, do the pranayam only for 10 minutes. That's Bhastrika and Anulom Vilom. I re-energize myself better yes, always you feel too much energy after because that. sir, oxygen is free in air everywhere, every time. Is good actually. This is the good habit. When like when it was just like for everyone, if you want to do any habits, okay, you can be do just for the 21 days. जैसे कि मैं बताऊँ तो मैं ग्रीन टी मुझे पसंद नहीं था, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है मेरा तो, क्योंकि चेयर पे बैठना है ना। अभी देखो मैं दिन भर ग्रीन टी पीता हूँ। हाउ? बिकॉज अभी मैंने क्या किया, उसको प्रैक्टिस में डाल दिया। 21 डेज मुझे अच्छे नहीं लगे, स्टार्टिंग के 7 डेज, फिर 8 डेज में थोड़ी हैबिट, और अभी उसको एकदम मतलब अलग ही लेवल का मजा आता है मुझे ग्रीन टी पीने में। मुझे नेचुरल जो अपनी दूध वाली जो चाय होती है उससे ज्यादा मजा आता है ग्रीन टी में, अभी के केसेस में। There तो sometimes very difficult to maintain consistency यस, yoga. यस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है योगा में। खास तौर से देखो क्या होता है ना कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो दो चीज होती है ना, एक तो होता है बुद्धि,
और एक होता है मन। ठीक है। Yes, अब sir. And sir, breath is a bridge connecting to our body and mind. यस, और ये कनेक्टिविटी जिसने मेंटेन कर लिया, अब क्या हो गया, नाउ योर मन, ठीक है, जिसको तुम जिस भी नाम से बोलते हो, मन इज योर सर्वेंट। और जिसका सर्वेंट मन हो गया ना, उसका तो टेंशन ही खत्म हो गया। ठीक है। मुझे क्या बोलते हैं, घूमने जाना है, ये कौन बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है। ठीक है। मेरी बुद्धि बोल रही है फोकट का टाइम मत बर्बाद करो, है ना। अब क्या हो गया, मन बुद्धि के कंट्रोल में है। लाइफ में हमेशा गलती क्या होती है, हमेशा गलती ये होती है कि बुद्धि जो होती है वो मन के कंट्रोल में रहती है। और मन क्या बोलता है, रिलैक्स कर लो ना यार, थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर लो ना यार। ठीक है, सो जाते हैं फिर उठेंगे तब कर लेंगे ना यार। अच्छा उठ गए हैं, थोड़ा नहा लेते हैं तब कर लेंगे ना यार। चलो थोड़ा बाहर वॉक करके आते हैं तब कर लेंगे ना यार। ये मन जो है ये बुद्धि को घुमाता रहता है। एंड ओनली प्राणायाम और ये मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द टूल फ्रॉम दैट यू कैन बी कंट्रोल दैट। ठीक है। Sir, तो and our thoughts and wisdom is also control. यस, ठीक है, सब कुछ सर कंट्रोल कर सकते एक्चुअली आप जो बोल रहे हो वो भगवद गीता के दूसरे सांख्य का अध्याय में बहुत विस्तार से बताए हैं। हैं। बुद्धि और मन का सारा खेल है। करेक्ट, मैंने भगवत गीता पहले पढ़ी हुई है। अभी मैं लगभग 2 साल से नहीं पढ़ता हूँ, मैं 2 साल से केवल चैंटिंग करता हूँ। ठीक है। ठीक है, चैंटिंग करता हूँ। तो चैंटिंग में क्या होता है कि चैंटिंग से दिस इज द ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्राणायाम। ठीक है। क्योंकि जब आप चैंटिंग करते हो तो आपका पूरा फोकस जो होता है चैंट पर रहता है, और इस तरीके से बार बार किसी चीज को रिकॉल कर रहे हो ना, तो आपका जो माइंड है इधर उधर से भाग के वापस आना पड़ता है उसको। ठीक है। हाँ तो सर, कोई भी मेथड हो लेकिन उसका एम तो यही है एम कि एक ही है। माइंड जो है वो लेस यस, थॉट के स्टेट में जाए और हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। एग्जैक्टली, हर चीज का एम एक ही होना चाहिए हमारा, कि हम ये जो मन है इसको बुद्धि के कंट्रोल में डाल दे बस। हाँ सर। बुद्धि कभी भी ना, बुद्धि कभी भी आपका लॉस नहीं करवाती। अब बताओ हाँ क्यों। बुद्धि यही करती है ना, विशाल कुछ अच्छा करो, विशाल लाइफ में कुछ बड़ा करो, है ना। बुद्धि हमेशा आपके बॉडी का विकास चाहती है। ठीक है। और मन क्या करता है, मन कहता है मैं बॉडी का हूं भी नहीं, मैं तो आत्मा का हूँ। सर उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ बुद्धि तो और कर, शरीर के साथ कुछ भी हो जाए बॉडी के तुम्हारी साथ। तुम्हारी शरीर फेमस हो जाएगी, उसको मन तो मन को सिर्फ क्या लेना देना। टेम्पररी प्लेजर चाहिए, उसको तो यस, बाकी सब कुछ नहीं उसके लिए मायने नहीं बहुत रखता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें बस यही करना है कि अपने मन को जो है वो दिमाग पे लगा देना है कि भाई इस बॉडी का ग्रोथ करना है, यही तुम्हारा काम है। अभी वो क्या करता है, वो कहता है हमें क्या लेना देना तुम्हारी बॉडी से, विशाल फेमस हो जाएंगे तो विशाल को मन को क्या मिलने वाला है ना। विशाल के मन को तो अभी तुरंत चाहिए क्या, चाटो रील देख लिया, ठीक है, हाँ, मन को कुछ मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर लिया, एक बढ़िया सी चाय पी लिया, हो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब विशाल का जो मन है पूरा दिन इनको बेवकूफ बनाता है, यही होता है ना। ठीक हाँ है ना। सर, और ऐसा निरंतर अभ्यास से पहले तो जमता नहीं, लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहे तो ये धीरे धीरे हो ही जाता है। यस यस, किसी भी तरीके का एक मेडिटेशन या फिर करो, या फिर जैसे मैं चैंटिंग बोला ये करो, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। यू कैन बी डू दिस, इसको हैबिट में डाल दो। 21 डेज तक आपको ये अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद इतना ये यूज टू हो जाओगे इससे, कि मैं बताऊँ तो मैं लॉकडाउन के पहले मैं डेली रनिंग करता था। ऑफिस से आने के बाद मैं हार्डली 8 बजे तक आ जाता था, 8:30 बजे मैं ग्राउंड में होता था। और वो मैं रेगुलर करता गया, और आफ्टर 1 मंथ ऐसा रियलाइज होता ना, जिस दिन नहीं जाता ऐसा बेचैनी होती कि यार आज तो रनिंग किया ही नहीं, आज तो रनिंग किया ही नहीं। और अभी देखो हैबिट टूट गई है, अब नहीं करता है। ठीक है। तो ये हैबिट को 21 डेज लगते हैं, और जैसे 21 डेज फिनिश होंगे ना, तुरंत ये यूज टू हो जाएगा। ये आइंस्टाइन ने बोला है, कोई हम लोग तो नहीं बोल रहे, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है। तो आइंस्टाइन सेड कि वट एवर यू वांट टू डू द हैबिट्स, जैसे कि प्रैक्टिस का हैबिट डालना है। ठीक है। अभी प्रैक्टिस के हैबिट में भी ऐसे कई बार हो जाता होगा, जो बहुत अच्छे लड़के करते हैं कि भाई आज तो कुछ बनाना है, आज तो कुछ अलग क्रिएट करेंगे, आज तो देखेंगे स्टील कितना स्टील मांग रहा है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तरह तरह से हम अपने आप को क्या बोलते हैं उसको यूज टू करा दें विथ हैप्पीनेस, उस काम में मजा आए। फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे जब तक, अभी तक नॉर्मली क्या करते हैं लोग, नॉर्मली लोगों का एम ये रहता है कि जॉब करूंगा इसके लिए सीखना है। ठीक है, इसके लिए सीखोगे तो बुद्धि तो बोल रहा है बट मन तो बोल ही नहीं रहा है, मुश्किल से 2-4 दिन बेवकूफ बना देगा। ठीक है, अभी जैसे देखो अभी अपने बैच में 30 लोग हैं। ठीक है, प्रेजेंट कितने हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, अगर सबको सक्सेस बना देना, ठीक, बनाने का बस एक ही तरीका है, मन को कंट्रोल कर लेना। नहीं हो सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट विशाल।
ठीक है। यस सर, और जो यूनिवर्सल पावर है जो हमारे अंदर बाहर काम करे, उसके साथ जुड़ने के बाद एक अलग ही स्पार्क रहता है लाइफ में। हम्म वो एक फेस पे एक अलग सी लाइट रहती है ना। वो एक हाँ सर। अलग से कनेक्टिविटी, अलग सा एक तीज जो होता है, whenever you just क्या बोलते हैं, you just contact with that person, ठीक है, you feel too much refreshment, too much energy, ठीक है। ऐसा मेरे साथ कई लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और यू कांट बिलीव whenever I just go with their like company, means I just sit with them, इतना पीसफुल हो जाता है मन, इतना कंट्रोल हो जाता है। अब इसे कौन रियलाइज कर सकता है? जो इस चीज को समझता है हाँ ना। सर। ठीक है, और ऐसा कई बार होता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं, अरे यार कितना निगेटिविटी आ जाती है, ऐसा हाँ होता है। सर, बहुत मुझे तो बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है, बस उनके पास जाते ही वो फील आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं कि उनके प्राणायाम से ऐसा हो। ठीक है, हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, नेम आई डोंट रिकॉल राइट नाउ, सी वाज इन द स्टाफ, सो सी वाज टू मच प्योर सोल। प्योर सोल समझते हो? ठीक है, वो डेली उसको आए तो मतलब कि उसको ये भी याद रहे कि आज इस गार्ड का बर्थडे है, उस गार्ड के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए। सी वॉज नॉट वेरी रिच, बट सी वॉज अ प्योर सोल। ठीक है, गार्ड का बर्थडे उसको लेके आए कुछ ना कुछ। ठीक है, किसी स्टाफ का बर्थडे है तो उसके लिए, अब ऑफ कोर्स उसका बजट इतना नहीं था तो घर से केक वोक बना के लेके आए। शी वॉज टू मच प्योर लाइक सोल। और जब उसके पास बैठू, उसका एक ऐसा ऑरा था उसके वर्क का लेके। ठीक है, वो कोई पूजा नहीं करती थी, पूजा जो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या है? प्योर सोल होना। ठीक है, वो इतना प्योर थी कि उसको ऐसा था ही नहीं कि विशाल के साथ कुछ फ्रॉड कर दिया जाए। ठीक है, प्रखर का प्रमोशन हो, ऐसा कुछ कर दिया जाए जो ऑफिस में होता है जनरली। ठीक है, तो ऐसा जो करता है उसके साथ बैठोगे बहुत इरिटेशन फील होगी। बट वेन यू जस्ट ट्राई टू टॉक विद दैट टाइप ऑफ गाय हु इज द प्योर सोल, ठीक है, प्योर सोल समझ ही रहे होगे लोग, काफी लोग। ठीक है, तो इतना एनर्जी मिलती थी, इतना एनर्जी, इतना पीसफुल कि आप कितने भी गुस्सा में रहो, ठीक है, व्हेन यू जस्ट सिट विद दैट पर्सन, रिलैक्स हो जाओगे। ये पावर होती है प्योर सोल की। और जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्या करते हैं? ये सोल को तो प्योर करते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो देखो बच्चों के साथ देखो, कुछ कुछ बच्चे होते हैं, मैं अभी गांव में गया था, एक मेरा दोस्त है, उसकी बच्ची थी, ठीक है, उसकी से 2 साल की, इतना प्योर सोल, इतना प्योर सोल, उसको देख के तुम, उसकी स्माइल को देख के तुम पूरा दिन एकदम अच्छा अच्छा से ऐसे लगने लगता था ना। मैं ऐसे ही, मतलब वो क्या बोलते हैं हमारे घर पे, मतलब ऐसे कैसे गांव में सबका घर आसपास ही होता है ना, तो जैसे हमारे घर पे थोड़े बहुत ऐसे चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह हम लोग रख देते हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है कोई आए तो उसको कुछ ऐसे बच्चों को दे देंगे। तो वो जब वो आए तो उसका स्माइल देख के ही ना, तो अपने आप ही पूरा दिन ऐसे एनर्जेटिक हो जाता था। क्यों? हाँ बिकॉज ऑफ प्योर सोल। और कुछ लोग को देखो ऐसा होता है, क्या यार किसको देख लिया तूने। सर। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा टॉपिक है तुमने डिस्कस करवाया। इससे क्या होता है, व्हेन यू जस्ट टॉक विद दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आल्सो दैट फील्स द एनर्जी। ठीक है, व्हेन यू जस्ट टॉक ओनली योगा योगा वर्ड्स, ठीक है, इसमें इतनी एनर्जी है कि वर्ड ही पावर दे देता है। यस ठीक है, ओके मिस्टर विशाल, सो यू व्हाई यू ज्वाइन लेट? सर, बिकॉज आई गोज इन सिटी, बिकॉज आई हैव सम वर्क, ओके so that that reason I come late in my house. ओके That's ओके, why हाउ I joined. लॉन्ग योर सिटी इज फ्रॉम योर होम, लाइक विलेज? 15 kilometers. 15 kilometers. That is Bane to Shivaji Nagar distance, approximate 15. So you just go there in Shivaji Nagar? Yes, sir. I In was Swargate. No, no, sir. Swargate area. I just came from the Swargate. ओके। Okay. सर, आपसे मिलना है लेकिन अभी तो Okay, जॉब no, का कंफर्म हो जाए तो एक दिन। it's okay, it's okay. Anytime you can meet. Even I was in the Swargate right, before 30 to 35 minutes before your class. I was there. Visited for some shopping in Lakshmi Road, and like related, because I'm going my hometown, so I required now like for home there's different jeans, t-shirt, and every thing I was there for that. ठीक है, सर, उसके पीछे एक्चुअली इस फ्लो में एक बार एंटर करना है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के, इसलिए मैं आपसे मिलना है, लेकिन एक बार जॉब फिक्स हो जाए तो आराम से आके आगे इट्स का ओके, डिस्कस करेंगे। it's okay, that is cool. Okay, you just try to focus your career first. Okay, यस सर। मीटिंग यू कैन डू एनी टाइम से, कोई वो नहीं है, मिल तो ऐसे ही रहना, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तो मिलने का बहुत अच्छा तरीका है ना। तो ये मिलना कुछ नहीं होता, मिलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करियर बनाना। ठीक है,
मुझे इतना वो नहीं रहता कि नहीं नहीं मिलना ही जरूरी नहीं, मिलना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपना कैरियर बनाना। ठीक है, कैरियर बना लो, एक पूरी लाइफ है अपने पास। ठीक है, और लाइफ नहीं भी रही तो क्या हो गया, वर्ड्स तो है ना अपने पास। यस ठीक है। ओके। ओके विशाल, चलो तुम पढ़ाई करो पहले अपना, क्या बोलते हैं इसको, ई टैब्स को, इस सेप को इंस्टॉल करो, क्योंकि तुम्हारा ई टैब तो पूरा नहीं हुआ है ना। हाउ मेनी लेक्चर्स यू कंप्लीटेड इन ई टैब्स? सर, completed 33 and 34 number half. Okay, try to finish today. Okay, Yes. and after that you just start the safe. Today just watch only one lecture of safe, not too much, only one lecture. Okay, tomorrow we'll discuss about the safe software, and then we'll continue the safe. Okay. Okay. So okay, Mr. Prakhar. Prakhar, audible now? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो बात की हमने विशाल से, पूरा ऊपर से तो नहीं गया? नहीं नहीं सर। अच्छा, समझ आया? जी। ठीक है, अच्छा लगा? यस Okay. Okay, what's your daily routine, Prakhar? सर, आई वेक अप अराउंड 7. I do a bit of exercises and then showers, breakfast, and then I sit down on laptop doing my classes all day. I take a lunch between 1 to 3. It depends. And then, sir, you want to know the full day, sir? Yeah. Full day routine? Yes. Then, sir, I usually do classes, or if I have to do any work outside, I can finish it. By 6, I try to be at home daily for my class at 7. Okay. From after 7, after this class? So after class, I'll have my dinner first of all, Okay. and then time to bed, sir. Okay. After Why some phone, I'm asking this question? sir, I don't know. Your habits is your future. Your today's Yes, habits is your tomorrow. Okay. If your today's habit is tough, your tomorrow will be high result. Okay. And if your today's habit is very comfortable, tomorrow will be the okay life. Okay. So yes, that's sir. why. Sir, I have started a revision of STAT and AutoCAD as well. Okay. My plan is also about to finish Okay. of that project. Okay. In Stat Pro, you just completed the Stat Pro, na? Or revision the Sir, Stat Pro, right? I have started today, sir. Today only. Yes, sir. Okay. In AutoCAD, what is the use of data extraction command? Data extraction command, sir. What are the types of file we can attach in XREF? Sir, in XREF we can attach document, photo, picture, and the similar documents. How can we calculate FSI? How can we Sorry. calculate FSI? देखो, पहले भूल गए ना AutoCAD। ठीक है, यही होता है, इसी को हमें मेंटेन करना है प्रखर। इसीलिए मैं बोलता था ना एक्सेल सीट बनाओ। ठीक है, अभी ट्रेनिंग के एकदम लास्ट पड़ाव पे हो। ठीक है, क्यों? अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या होता है कि हम जब चीज़ें छोड़ देते हैं ना, तुरंत फॉरगेट होने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, और अगर एक्सेल सीट है तो हमने जस्ट रिकॉल कर लिया, चाहिए ये टॉपिक बहुत दिन हो गया, थोड़ा याद नहीं आ रहा, चलो इसको रिवीजन कर लेते हैं, चलो ये टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा रिवीजन हैबिट को डालो और अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करो, और प्रैक्टिस कभी मत छोड़ो प्रखर। ठीक है, जब तक कि सफलता न मिले, है ना। चलो आज ई टैब्स का, सॉरी आज सेफ का फर्स्ट लेक्चर वॉच करना। मैं अभी भेज रहा हूँ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके फर्स्ट लेक्चर उसका करो। ठीक है, व्हाट स्कोर्स टुडे एवरीवन गेट? विश्वजीत गॉट 5, प्रथमेश गॉट 7, प्रखर गॉट 3, सुनील गॉट 5, सत्यांशु गॉट 4, एंड विशाल गॉट 6। दिस इज द योर टुडेज मार्क्स। अब इसको कैसे इम्प्रूव करोगे, यू नो बेटर देन मी। तो अभी करना है, और करके शायद इसके बाद एक आध दो मौका और ही होंगे बस, उसके बाद मौका होगा नहीं।
ठीक है, तो कोशिश करो इसकी अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत। एक एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है, ठीक है, आपका आफ्टर योर प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन? जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका प्रेजेंटेशन होगा। उसके प्रेजेंटेशन 15 को स्टार्ट होगा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपका एक शायद 20 के आसपास या फिर 17-18 के आसपास एमसीक्यू टेस्ट होगा, जिसमें स्टेट्रो तो आई थिंक हम लोग का एक बार हो गया ना, तो अभी ई टैप्स का हम लोग का टेस्ट होगा। ई टैप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े बहुत स्टैट भी मिक्स करेंगे जैसे कि रिवाइज होता रहे, और डेफिनेटली ऑटो कैड भी है उसमें थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। ठीक है जी, चलिए प्रथमेश का कोई क्वेश्चन है कुछ बता देते हैं। बाकी आप लोग कल सेफ को इंस्टॉल करके आइए, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ के आइए सेफ का, फिर आगे चलते हैं। यस प्रथमेश बोलो। हेलो सर। यस प्रथमेश। सर वही एक था कि मतलब जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और टाइम हिस्ट्री का है उसके करेक्ट। चेक पॉइंट्स क्या क्या है। यस, वो मुझे करना है, मुझे पता है। वो एक्चुअली छोटा सा नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा उसको और बृहद रूप में करना है, ठीक है। तो मैंने आज उसके लिए पीपीटी मुझे बनानी है, ठीक है, तो पीडीएफ जैसा कुछ, तो वो मेरा अभी तैयार नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को आज कंसीडर नहीं किया। ठीक है, वेट करो, अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, जल्दी जल्दी में अभी बताएंगे तो भी तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ उसका कुछ ऐसा प्रमाणित तुम्हारे पास रहे कि तुम कभी फ्यूचर में चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज प्लान कर रहा था बट मेरा पूरा दिन बाहर चला गया, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। ठीक है, आई डू डेट डेफिनेटली, मेरे खुद के प्लान में है कि आपको एक चेकलिस्ट मिलनी चाहिए उसकी। ठीक है सर एक लेक्चर इस पे डेडिकेट कर सकते हैं कि मतलब हम मतलब जो डेटा हमारे पास आया है ए टाइप या स्टार्ट से, जो हम एक्सेल से कंफर्म करते हैं या फिर मतलब चेक करते हैं, मतलब उस पे एक लेक्चर हो जाए कि वो तो एक्सेल होना ही शीट्स है, एक्सेल यूज। सीट पे होना ही है, वो तो होने ही वाला है अपना। अभी एक्सेल सीट हुआ ही नहीं ना। ठीक यस। है, मैं एक्सेल स्लैब का भी बताऊंगा, बीम का भी बताऊंगा, कॉलम का भी बताऊंगा, फुटिंग का भी बताऊंगा, चारों एक्सेल होंगे। एक तरफ आपकी रैबिट की मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक तरफ यही सब चलने वाला है, क्योंकि मॉडलिंग में तो पूरा प्रैक्टिस है ना, उसमें तो मेरा यस कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो मॉडलिंग आपकी एक तरफ चलती रहेगी, एक तरफ यही चलने वाला है, 15-20 दिन यही होने वाला है अभी तो। सर मैंने आपको एक DWG फाइल भेजी है जो मेरा कल आपने बोला था ना कि चेंज करके देख लो, मैंने भेजा है सर, आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक चेंज कर लो के देख लो मतलब? सर जो मेरा G+20 वाला था ना अपार्टमेंट, जो हाँ, आपने बोला था देखो गार्डन एरिया ये करके, मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसका साइज जो तुमने उसका बालकनी इधर उधर किया, राइट? हाँ हाँ चलेगा। ठीक है, ये बस सुनील इवन वो। ऑड भेजा है। ओके ओके, चलेगा, आप मैं एक चेक कर बार। ले रहा हूँ। ये सुनील बोलो। सर आरसीडीसी फाइल भेजी है सर आपको ना, एक उसमें एरर आ रही है एक। ओके, ठीक है। आरसीडीसी फाइल में एरर आ रहा है या फिर क्या बोलते हैं, क्या एरर सर क्या आ रहा स्क्रीनशॉट भेजा है सर एक। है? ओके ओके, ठीक जब है। सर हम फाइल इंपोर्ट करते हैं ना, हाँ हाँ, उसके बाद हम ग्रेड करते हैं सर, जैसे कॉन्क्रीट M25 FE500, पर जो करेक्ट। मेरा सॉफ्टवेयर है सर उसमें वो आ नहीं रहा है। ओके, समझ गया। उसका एरर तो मुझे रिजल्ट समझ में आ गया, तो फटाफट डाउन कर दो, फिर देखता हूँ। देखो तुम्हारा क्या हुआ होगा कि इसमें एक्चुअली ऐसा रहता है कि कहाँ भेजा है सुनील। ठीक है, ये ठीक है, ये पूरा ही नहीं आ रहा है। यस सर। ये अगर पूरा नहीं आ रहा है तब तो गड़बड़ है। तब क्या है कि तुम्हारा जो स्लैब है ई टैप्स में उसमें डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर उसमें पूरा डिफाइन डिजाइन किया है क्या स्लैब में, जो वहां पर जो ई टैप की फाइल है उसको डिजाइन किया है क्या? नहीं किया है। एनालिसिस तो किया था। नहीं, उसको डिजाइन कर दो। क्या हो रहा है, वहां का डाटा रीड नहीं कर पा रहा है ना ये, कोई एक डाटा यस रीड नहीं करता तो मैं तुमको सोल्यूशन बताता, बट ये पूरा ही नहीं रीड कर रहा है ना। यस ठीक है, तो वहां सर। पर फाइल को एक बार डिजाइन करो। कॉलम में भी ऐसे सर इंपोर्ट किया था ना, हाँ फिर उसमें सर जो मतलब एक बार फिक्स आ गया वही रहा, फिर वो भी नहीं हो रहा है चेंज। हाँ, तो उसको तुमको डिजाइन करना पड़ेगा पहले। केवल एनालिसिस करके फाइल को मत लेके आओ, डिजाइन करो, और जब इंपोर्ट करो इसमें तो क्रैक विड्थ वाला ऑप्शन ऑफ रखना। ठीक है, क्रैक विड्थ ऑन रखोगे तो मटेरियल बहुत ज्यादा मांगेगा और प्रैक्टिकली उतना मटेरियल तुम दे नहीं पाओगे। ठीक है, सर क्रैक विड्थ ऑप्शन कहाँ पर होती है? जब इंपोर्ट करते हो तो कॉर्नर में पूछता है कि क्रैक विड्थ ऑप्शन रहता है। ध्यान से अभी जब इंपोर्ट करना फाइल को, तो चाहे कॉलम के लिए करो चाहे बीम के लिए करो, सबके लिए पूछता है क्रैक विड्थ। ठीक है, Yes. तो उसको ऑफ कर देना। तो उसको ऑफ करने से क्या होगा, तुम्हारा लेस रेनफोर्समेंट में पास करेगा ये। फिलहाल ये जो तुम्हारा एरर है ये तो पूरा ई टैप की फाइल का प्रॉब्लम है। ई टैप की फाइल को एक बार डिजाइन करके लेके आओ। ठीक है, और जब लेके आओगे तो ऑटोमेटिक रीड करके लेके आएगा पूरा फाइल। कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ सही है, बस उसको डिजाइन करके लेके आ जाओ। ठीक है, Yes, sir. नहीं होता है मुझे भेजो। ठीक है, लेकिन एक बार डिजाइन कर लो,
उसके बाद, क्योंकि अभी एक 2-3 लोगों का ऐसा हो रहा था कि उनका 415 आ रहा था, 500 आ ही नहीं रहा था ग्रेड, है ना। तो क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया था उस चीज़ को। तो जैसे डिज़ाइन सर करोगे मेरा पूरा डाटा ले लेगा। मेरा भी ऐसा ही हो रहा था सर। हाँ, तो वो डिज़ाइन का प्रॉब्लम है। सर कल क्लास है। हाँ, कल क्लास है। ठीक है, कल क्लास है। हाँ, ठीक है, और क्या कल एक मतलब कल क्लास मतलब कि कल क्लास जैसा क्लास नहीं रहेगा। कल थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि जो नहीं आए हैं ना उनको सरप्राइज देंगे। ठीक है, उनका मॉक यस स्टार्ट कर देंगे अचानक से। ठीक है, उनका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे हमने तो कुछ और ही सोचा था, कुछ और ही हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और आपका डाउट भी क्लियर करेंगे, उसके बाद उनका जो लोग लेट आएंगे उनको करेंगे, बट उनको बताएंगे नहीं। ठीक है, तुम सर। लोग भी बताना मत। एक क्वेश्चन और था हाँ, सर। बोलो बोलो। सर हमारे कम्युनिकेशन का क्लास एंड हो रहे हैं ना सर अभी। ओके, सर मैं एक बैच और कंटिन्यू करना चाहता था। कर लो, उसमें क्या है, एक बैच और कर लो। उसका रिन्यूअल चार्जेस बहुत नॉमिनल है, 500 है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका 500 रिन्यूअल चार्ज है, पे करके कंटिन्यू कर लो फिर से। ओके सर। ठीक है, और तो सबके लिए अभी जैसे गुरुकुल को भी रिवाइज करना है, तो गुरुकुल का भी 5000 है, रिन्यूअल चार्ज करके कंटिन्यू कर सकते हो, और उसका तो 500 ही है, क्या उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। कर लो, अभी 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से कंफर्म करके अपना सीट कंफर्म कर लो। ठीक है, और वो भी अच्छे टाइम पर है, 8:30 8 टू क्या बोलते हैं 9:30 है। जैसे इस क्लास को खत्म करोगे तुरंत उसमें एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, यस। सर यस प्रथमेश। सर प्रखर सर, हाँ प्रखर, बोलो। गुरुकुल का बैच किस टाइम पे होगा सर अगला? अगला बैच प्लान कर रहे हैं हम लोग कि तुम्हारे बैच को खत्म होते ही इसी बैच के टाइम पर दूसरा लॉन्च कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये अगस्त के बाद ही होने वाला है। ठीक है, रीज़न ये है कि अभी मैं घर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो घर जाते समय मुझे नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इसलिए वो वही हम लोग बीएसएनएल वालों से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर वापस आने के बाद करूँगा, सितंबर में होगा। ठीक है, सर बीम का बैच होगा ना लॉन्च सर? बीम का तो चल रहा है, स्टार्ट हो गया 25 तारीख से, तो वो फुल भी हो गया, वो तो सुबह सुबह न, चल रहा है। अगला बैच। अगला बैच एक बीम का है कि स्ट्रक्चर का, दोनों का है। बीम की टाइमिंग क्या रहेगी सर? बीम का टाइमिंग फिक्स हो चुका है 8:30 से 10, और उसके तो एडमिशन भी कंफर्म हो चुके हैं। 8:30 से 10 का उसका टाइमिंग दिया है, इवनिंग सर? इवनिंग। ओके। सर बीआईएम में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? ब्रदर उसमें ऑटोकैड रहता है, रेविट रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है प्रथमेश, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कंटिन्यू कर लो। और इसमें ऑटोकैड रहता है, स्टैट और रेविट रहता है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविसवर्क रहता है, टेक्ला रहता है, 3ds मैक्स रहता है, स्केचअप रहता है, और मोर इनटू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं उसमें आपके, कॉन्सेप्ट रहते हैं जैसे कि एलओडीज, उसमें क्या रहता है 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D। 8D में क्या आता है, 7D में क्या आता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ठीक है, और बीआईएम मतलब बिल्डिंग का वर्कफ्लो क्या होता है ये रहता है। ऐसे कई सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। सर वीरे वीरे करके भी कोई सॉफ्टवेयर आता है? वीर एक प्लगइन है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एक प्लगइन है जो कि 3ds मैक्स के साथ चलता है, जो कि उसके रेंडर को बेहतर कर देता है, वो भी है उसके अंदर। ठीक है, यस प्रथमेश बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था अभी ऑटोकैड से कि डेटा एक्सटेंशन कमांड या कुछ ऐसे कुछ है, तो सर वो उसका बताता क्या हूँ, है मतलब? बताता हूँ, एक बार विश्वजीत का क्वेश्चन ले लो तो बताता हूँ। यस विश्वजीत बोलो। सर वो एक फाइल भेजा था सर जो प्रोजेक्ट वाला है, ओके, तो उसमें सर जो ऑड इवन स्टोरी कैसे बनाना चाहिए सर, एक बार देख देंगे क्या सर? हाँ चलेगा। ठीक है, डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड का यूज होता है, उससे कंप्लीट डिटेलिंग्स कर सकते हो उस पूरे प्लान में। कितने रेक्टेंगल है, ठीक है, उनके साइजेस क्या क्या है, कितने टाइप के लाइन है, कितने लेयर यूज किए हो, कितना एरिया है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। कंप्लीट डिटेलिंग गेन करने के लिए जो भी तुम्हारे ऑटोकैड में बना है उसका कंप्लीट डिटेलिंग एक्सेल के फॉर्मेट में या डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में टेबल बना के अगर चाहिए तो डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड को यूज कर लो, पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। यही उसका यूज है प्रथमेश, करके देखो, बहुत मज़ेदार कमांड है। इवन मेरा तो यूट्यूब पे वीडियो भी होगा। डाटा एक्सट्रैक्शन ऐसे डाल दो, डाटा एक्सट्रैक्शन किसी भी प्लान पे फुल डिटेलिंग करके दे देगा उसका। ठीक है, सर चलो। एक्सरेफ में आपने बोला था कि मतलब फोटोज तो पता है कि हम जो स्क्रीनशॉट लेते थे वो आता है, उसके साथ हाँ, कोई और भी आता है एक्सरेफ में हम ऐड कर सकते हैं? उसमें डीडब्ल्यूजी कर सकते हो, पीएनजी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद खुद ऑटोकैड की फाइल की को भी इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब .dwg भी कर सकते हो, .png, .pdf,
.jpg, ये सारे फॉर्मेट कर सकते हो। टोटल 5 फॉर्मेट है उसमें। सर पीएनजी कौन सा फॉर्मेट है मतलब? पीएनजी फोटो का ही फॉर्मेट है। पीएनजी में क्या होता है, बैकग्राउंड ऑफ रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी फोटो है, मेरे बैकग्राउंड का कुछ ना आए, ऐसा देखा होगा ना, फोटो व्हाइट कलर पीछे हुआ गया हो ना, तो उसको पीएनजी फॉर्मेट बोलते हैं। फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, गूगल कर सकते हो, बट यही उसका पीएनजी फॉर्मेट होता है। सर ओके, इसमें कोई आप चेंजेस करना नहीं मतलब मुझे चेंजिंग नहीं लग रहा सजेस्ट है, कर? इसको कंटिन्यू कर दो, क्योंकि बेस्ट प्लान बन चुका है इस समय ये, ठीक है। मुझे चेंजिंग्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी डक्ट के चक्कर में पूरा बर्बाद मत करो उसको, इतना मेहनत की हो। अब इसको कंटिन्यू करो, और कैसे है ना, टाइम पर इसको फिनिश करना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। बहुत लेट कर दिया और बनाया भी तो कोई मजेदार नहीं होगा ना। अगर हम टाइम पर, अभी हमारे पास 11 दिन है, 11 दिन में प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। तो अब इसको ही यस कंटिन्यू करो, इसमें ज़्यादा मत करो। अब इसके डिटेलिंग्स में, एनालिसिस में बहुत टाइम लगने वाला है ना। यस। चलेगा। यस विश्वजीत बोलो, क्या सर इसका साइज भी देख लीजिए, और जो है ऑड इवन वाला कैसे करना है सर, ये पूछना था। ठीक है। अब इसमें तुमने ये बाथरूम इधर दिया हुआ है, बालकनी कहाँ पे दिया तुमने? बालकनी सर दिया नहीं है, अभी साइड में देने की कितने हाई रेज इच्छा है बिल्डिंग, सर। कितने बिल्डिंग्स है इसमें? कितना करना चाहिए सर, पता नहीं ना सर। अरे तो तुमको डिसाइड करना है ना, ठीक है। और तुम पहले इस पे प्लान को रेडी करो, तब मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है तुमने बालकनी किधर दे रहे हो, तो मैं किधर का बता दूं नहीं, इसमें। वो जो डैश्ड लाइन है ना, वो बालकनी देने की कोशिश किया था सर। ओके, तो ये डैश लाइन अल्टरनेट चलेगी, ठीक है। अगर ये डैश लाइन देना चाह रहे हो, तो ये डैश लाइन एक फ्लोर पर यहाँ दो, दूसरे फ्लोर पे यहाँ दो, एक फ्लोर पे यहाँ दो, दूसरे फ्लोर पे यहाँ दो, ऐसे अल्टरनेट चलाना पड़ेगा इसको। मतलब दोनों बेडरूम पे नहीं देना है। यस, एक बेडरूम पे देना है। रीजन, उसको वेंटिलेशन के लिए हाइट चाहिए ना उसको। हर 10 फीट पे बालकनी रहेगी अगर, तो उसको सनलाइट आएगी क्या अंदर अच्छे से, लेकिन 20 फीट पर रहेगी तो आराम से सनलाइट एंट्री कर जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक फ्लोर पर यहाँ दो प्लान पे, दूसरे फ्लोर पे यहाँ दे दो, ये चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। एक फ्लोर और पर, सर वो, यस। हाँ सर, डाक्ट देना चाहिए क्या इसमें? वो मेरा तो बाथरूम बाहर की तरफ है, हाँ तो बाहर है तब जरूरत तो नहीं है, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब बाहर बाथरूम है तो डक्ट की कोई आवश्यकता नहीं इसको कितना फ्लोर करना चाहिए तो सर, है। आई ज्यादा थिंक हो कम सकता से है कम क्या? G+10 तो करो, ठीक है। और इसके G+10। नीचे सर वो मतलब स्टोर रूम नहीं, वो कमर्शियल जो है 2 फ्लोर तक बनाना चाहिए था क्या सर? इसको हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, केवल रेसिडेंशियल करो, कि कॉमर्शियल करने लायक प्लान नहीं दिख रहा तुम्हारा, खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब कॉलम का पोजीशन अलग हो जाएगा। कॉलम के पोजीशन अलग हो जाएंगे, प्लस ये पूरा रेसिडेंशियल जैसा ही बना है पूरा प्लान, ठीक है। तो इसको कॉमर्शियल ही और केवल रेसिडेंशियल ही बनाओ, बहुत है। G+10 बना डालो इसको, थोड़ा फास्ट करो, अभी बहुत पीछे हुई थी तुमने। एक हफ्ता पहले मुझे यही दिखाया था, इसे बस रीनेम, ये डायमेंशन केवल दिए हो, है ना। नहीं, उस टाइम एक ही 3 BH हाँ का मुझे बनाया पता है, था, मुझे अभी पता है, मुझे पूरा याद है, अभी ठीक है। टू बी लेकिन एच के बनाया सर। ठीक है, पूरा बना के क्या बोलते हैं, कल ही दिखाओ, पूरा दिखाओ कि इस लेवल पर बन चुका है, तो ऐसे मतलब देखने का लगना चाहिए ना कि कुछ बना है।